So today we don't have just a UPSC ranker with us. She truly exemplifies what Max Weber would have called as charismatic authority. Okay. And there are many reasons for that, and I'll be sharing those reasons with you in a very short while. Many people have cracked UPSC. Few have conquered it, and still very few have slayed it. And she has slayed it 3 times consecutively, with each time securing a rank better than the previous one, starting with UPSC CSE 2022, All India rank 188. UPSC CSE 2023, All India rank 97. UPSC CSE 2024, All India rank 7. क्या दुश्मनी थी आयुषी यूपीएससी से? एंड दूसरी बात ये that she has got many feathers to her hat right from the beginning of her life. She is BTech electrical engineer from IIT Kanpur, a gold medalist in her batch in IIT Kanpur. Joined McKinsey later, quit it because she had some determination. She wanted something else in her life, and she did not stop until she achieved it. Ayushi embodies what we call as competitive spirit. Not just that, she also has elements of altruism in her, because many of your batchmate Ayushi told me about how helpful you have always been with them when it comes to weapons training. When it comes to many other things in life, you have always admired people around you, took learnings from them, shared your learnings with them. This has been journey of competition coexisting with cooperation. And Ayushi is here with us today to share all those learnings with us. We will be having 3 segments in this session today. The first segment would be about the wider area, which is GS. Okay. And Ayushi, I would like to begin with very basic question. Okay. I don't want to ask you any cliched question like what are the sources. Okay. There are two things I firmly believe. One is tool, second is labor. The books that you read is tool. Labor is what goes inside. Labor is what has gone into the making of the finished product. And people like her are the finished product, which are not made by the tools but by the labor that they have put into that final product. Ayushi, you tell me please, what was so common to all these 3 attempts that you cleared UPSC? I was saying thank you so much for inviting me here, and I don't know if I deserve so much of praise or not, but thank you so much. Um, Sir, regarding what was common to all of the attempts, sir, I believe that first thing we all of us actually do is syllabus completion, where I believe that ultimately everyone does it. By the time we reach our prelim stage, if we are a very serious aspirant, we do finish our syllabus to some extent. But where we lack is actually implementing and practicing that. So in each of my attempt, I ensured 3 things. One was a very good amount of practice, which is answer writing. So now by answer writing, it seems like a very common cliche word, everyone says it, but what I tried to do it was, I practiced it in certain steps. When I started it in my first attempt, I had zero clue about answer writing. So I just took some toppers copies, I made an Excel sheet, and for each of the paper for GS1, GS2, I wrote the toppers marks, highest marks, whoever secured the highest marks in that paper. I searched to multiple mark sheets and I took that toppers paper in that specific subject. And then I took a question from their paper and wrote that answer on my own. And then I checked their answer and tried to find out what they did better in that specific paper. So I did this for all the papers. And second thing which I did was, and again a very simple thing, to stick to the syllabus and PYQ. Yes. In each of the 3 attempts, sir, I had memorized syllabus by heart. But whenever I began my preparation, I used to still go through syllabus again.
And every day I used to read the syllabus once, and every day whenever I see a syllabus line, I'll go through the PYQs of that particular syllabus for each of the papers, so that I do not digress here and there, and I used to write those PYQs also. So these two things remain common. Third thing, sir, newspaper has been a very important strength, a pillar of my preparation. So I utilized newspaper as much as I could. I did not make notes out of it after my second attempt because I felt that was not needed, but I tried to utilize it in my GS answers. So that was another thing. I think this was 3 things. Referred answer copy of toppers every now and then, despite herself being a topper. इसे कहते हैं humble रहना, grounded रहना. Okay. Herself being topper and she is still referring to topper's copy. Okay. And then, secondly, not just referring to topper copy, but also checking PYQ every now and then. And thirdly, reading newspaper religiously. The fourth element that she pointed out, that she referred PYQ multiple times so that she does not get digressed. The most important point which we more often than not do get. In this world of social media, it's very easy to get digressed. क्यों आपको what was that power inside you that was stopping you from getting digressed? What was the source of that confidence in you कि मेरे को जरूरत नहीं है notifications की which are popping up? So this is one thing I actually religiously followed, and I would like to thank my mother for this, because I made my own strategy. Usually people say make notes of everything, but I decided that for history and polity, let's say, I will not make my notes. I will study from the book, I'll highlight, and I'll study it in my own way. I'll make notes for ethics, I'll make notes for sociology. So I had my own strategy. So whenever I used to think maybe I'm not doing right, so my mother used to tell me that this is just an exam and you have confidence in yourself that you are doing right. There is no one way to clear this exam, and this is just another exam like in college. So just prepare simply and have faith in your strategy. And whenever, sir, I used to give test, if there was some mistake, if there was some course correction needed, I used to do that, but most of the time it was on the right path. And I used to keep it, as you used to say in the class also, so try to write it like a first attempter. So I used to keep it as simple as possible, not run behind multiple books or multiple sources. Just read what I have, revise it once or twice, and write as much as possible. Very nice. So guys, just to share with you a very basic insight about her background. Okay, she lost her father when she was 10, I guess. Okay, and her mother has been the strongest pillar of her support, and maybe the sense of losing father at very early stage of life may have instilled in her sense of determination and responsibility, which gets manifested today in this form. Ayushi, I would like to ask you one more question now, continuing with GS. What are students, if you were to point out any mistakes, since you have seen it all, what are the mistakes students are committing year by year? So there are 2-3 things. One is going here and there too much. I did this mistake during my JEE preparation days when I was in 12th standard. In UPSC, just stick to the syllabus and PYQs. If you go through the syllabus, for example, I think GS3 people find one of the toughest papers. And if you see GS3 syllabus and PYQ, you will realize they're actually asking straight from the syllabus question. It cannot go simpler than that. They're just picking up the question from the syllabus and asking in the exam. So just stick to the syllabus and PYQ, read it as many times as possible. That's like the holy grail. Toppers copies, one must refer time and again, that can help. Um, another mistake, sir, I can think is not practicing enough. This is something Answer I've seen. writing, Answer especially. writing, yes, sir. What happens is we are too scared to sometimes write. We are too scared to write our first answer. We think, just let me study properly. I still don't remember all the things. I don't have all the information with me. Let me study more. कल लिख लेंगे. आज थोड़ा और पढ़ लेते हैं. So we keep on delaying it, and the day never comes. And when we do ultimately start answer writing, we see कि हम 7 minutes वाला answer 10 minute में लिख रहे हैं, 12 minute में लिख रहे हैं. So it again lowers our confidence. But the only way to do it is to do it.
Once you nice. start writing, it will take multiple attempts to reach that final answer. When I was packing my notebooks, I saw the first answer I wrote, and it was some 150 words question, 10 marker. I wrote 400 words in that answer in 20 minutes. That was my first answer. So from there till here, so everyone, it happens with everyone. No one is able to finish their paper in the first try. No one is able to write a good answer in their first try. The only way to do is just slog through it and write one. Just start. That is the only thing. I just break that initial inertia and just start, no matter where you are. Very nice. So Ayushi, everybody, I would say, are reading almost same books. They are referring to almost same resources. Okay. Everybody is now also using ChatGPT. Okay. Now, content is not exclusive to anyone. It is just a click away, accessible to everyone. That means eventually content is not making as much as difference as the labor is, which you just shared with the students, PYQ and determination that and confidence that this is enough and this is what is required. And not waiting for that final day that when I complete the syllabus, then I'll write the best answer ever on planet Earth. But you actually started with your answer writing right from the very beginning. But many students are actually struggling to first finish the syllabus and then find the right day. Okay. And that means you should not be waiting for the syllabus to get finished, because syllabus does not get finished, right? Maybe PYQ does get, but syllabus does not. Okay. Fine. Let us come to second aspect of it. When it comes to GS preparation, um, especially GS3, if I talk about very briefly, everybody is struggling to cross 100 in GS3. I don't know why they have taken it to themselves. It has become matter of ego to many students, to put it very bluntly. Okay. They believe that they are giving their best to GS3 till they are getting 84 and 89. This is the two topmost figure that I see every year. Should they get stuck to this cycle of thinking about how to cross 100, or should they start working hard on other areas where potential to score is much better when it comes to giving input? What do you have to say? Sir, one most important thing is we should never get emotional about the exam. We should take it very practically and logically. We should understand what our strengths are, what our weaknesses are. If there are ways to increase marks in GS3, we must definitely not ignore it to 84 marks. There are ways to increase it, but it should not be like that if we have 3 months between prelims and mains, we are giving 2 months to GS3. That does not make sense. Yeah. So what, in all the 3 attempts, one more common thing which I followed was I actually focused equally on all the subjects. I was never like that I'll give all the time to ethics, all the time to optional. That was never my strategy, sir. I gave equal attention to all. And wherever I found that there is a good scope to score more, I gave a little more attention to that. For example, ethics. So same is with this also, sir. If in GS3, give some time. But if you think that there are other areas where you can score more, because ultimately nobody sees which subject you scored, they see your total score and Exactly. rank. So wherever you can score, just score there. That is fine. Okay, let's move to our second segment then. Okay. There are students who are preparing for UPSC 2026. Okay, and this is the time when students come to Delhi or may even aspire to prepare for UPSC sitting at home. Okay. What do you have to tell them in terms of planning? How should they plan this time from May to December? If you could write this up, okay, for beginners, what things they should keep in mind May to December if they are aiming for 2026? May to December. Rough planning. sir, one thing which I followed was to have macro targets and micro targets. So when I started preparing, I had roughly 10 months till the prelims exam. Okay. So I decided till December, I will finish my syllabus once. Which syllabus? Both GS and optional. I gave GS and myself a optional. very big Okay. target. Till December. Yeah. Fine. Till December, at least once, just go through it. I may not remember anything or not revised anything, but just gone through everything once. So Okay. that in January I can go through it again.
Okay. So this is something I follow, and I was actually able to do it also finally, because I Fine. gave myself this target. Okay. Another thing which I followed was to have micro targets. Then I'll have my monthly targets. What I'll do. Now Okay. it depends on person to person. Hmm. What I followed was I studied both GS and optional in a day. So I kept my month fixed. This month I'll finish my history. This month I'll finish my polity, because initially, sir, it takes a lot of time to finish even one subject also. Okay. Thinking from a beginner's perspective, Okay. to finish just Lakshmikant, I think it took me 1 month back then. So I gave myself subject-wise targets We can to say one subject per month. 1 month, yes. Okay. And in each of the month, optional simultaneously I used to do. Okay. Plus optional stayed till last. Yes, sir. Because sociology was something I really enjoyed studying, so I kept it as my refreshment. I'll read it every day. So Very nice. this is what I followed most. The best thing that she said is that she kept sociology for refreshment. And I often say that if you start enjoying the process, then you definitely get success. And I think she started enjoying sociology. That is why she is taking it as refreshment, not as burden. कि अब इसको भी पढ़ना है मैंने. Okay. Anyway, we'll be coming to that. Fine. So guys, this is her rough idea of how she went about her preparation. Okay. And I would always say that one subject per month, which she followed, is a strategy which not everybody is following. Somebody is targeting 3 subjects per day or 2 subjects per day. Everybody can have different strategy. This does not mean that you copy her or someone else's. Develop your own, because I firmly believe 1,000 students got selected, that means 1,000 strategies got selected. And one day when you get selected, you will also be known as a different strategy. Okay. Anyway. And so there were a lot of gaps after Mhm. this left, which I finished from January, when I finished before prelims, then I finished between prelims and mains. So this was just the first draft, first going through of things, so that I am aware of what is there in the syllabus. Very nice. Okay. Ayushi, let us talk about the optional sociology. First, very basic question. Why did you pick sociology optional? You were IIT Kanpur gold medalist. You could have taken maths. You could have taken chemistry, physics, or electrical engineering maybe. Why sociology? So there were two reasons. I started preparation actually quite late. I started in end of July 2021, and 5th of June we had our prelims. So roughly 10 months. So maths though was gone because couldn't finish it in 10 months with GS. So time was one major factor for me, that I have to take a shorter, a subject with a smaller syllabus. Okay. And second thing was, sir, You can come this side. I really enjoy this subject somehow. I did one course in IIT also of sociology, Okay. and that was one course where I scored the highest marks in my class. I felt like I might score here also. Um, And you were and quite right. I really enjoy. I think the interest was another factor. These two factors made me pick. Okay. Did that course was about industrial sociology? No, sir, it was around family and marriage. Around family and marriage. Okay, fine. So they basically you are saying that interest and the syllabus. These two things you saw, syllabus was doable according to you because it was shorter, and she found interest in her. The second thing. Fine. Now let us talk about sociology journey. How did you study? Not in terms of books or resource, but what again the labor that goes into the making of what we call as the final product. What things you kept in mind in sociology that these are the things I would stick to, just like you had this plan for GS. Sir, I'll share both the good things and the bad things I did. Definitely. So I gave 3 attempts with sociology. So every time my strategy changed a little bit. And finally, in this attempt, I gained some insights of what actually worked, because I was not able to figure out very clearly what works and what doesn't. So in my first attempt, I did my foundation course with Mohapatra sir, and I had my notes. So I was very it was first attempt, and I was very determined to do everything possible in sociology. So I read Harlambus also and made notes out of it. And for paper 2, I just had my notes. So with this much amount of information with me, I gave the exam. So I scored, I think,
262 in my first attempt, and I did not know much at that point of time. So I was like, this paper has a lot of potential for improvement. So in my second attempt, I read like crazy for sociology. I picked up EPG Pathshala and so many sources, especially for paper 2, because my paper 2 score was very low, 120 something. So I thought because there is this conception that we need to make our answer sociological, especially in paper 2. It's like GS like questions aate hain, how to make it sociological. So I read so much. I read everything possible I could do. In 3 months, I devoted like almost 2 months to sociology, and that was a blunder, to be very honest, because my GS score increased in that attempt and my sociology score dropped by 15 marks. So again, I was very puzzled. That means After 247. 247, yes. I was very puzzled after putting in so much of effort. What is going wrong? So then I joined your crash course in this attempt, sir. And then one thing sir started with saying was, keep it as simple as possible, write like a first attempter. That sounds very counterintuitive when you're writing third attempt. Then I started actually analyzing my answers and analyzing other toppers' answer even more. And one thing when I used to see the toppers' answer was, I was like, they're writing such a simple answer. How are they scoring so good marks? And that is when I realized that actually that is the key. So one thing, now in this attempt, I followed 2-3 things very religiously. One was satisfying the demand of the question. What happens in optional, especially, ki jaise hi we see some keyword. For example, one of the questions was, what are the factors for the continuance of the caste system? Now, caste system is such a hot topic. Everyone knows everything about caste system. You see caste system, you start writing without even realizing ki what is exactly being asked. That is something I used to do earlier. So now this time I held my horses and I was like, remain calm. Do not think what you know. Just think what is being asked. Don't think about thinkers. Don't think about criticism. Don't think anything. Just see what the question is, the factors and the continuance of the caste system. So you start with caste system, you talk how it is continuing, and then you straight away come to the factors which are leading to its continuity. And this is what a 10 marker should look like. So this is one thing I changed, and very consciously changed, ki I have to stick to the demand of the question, no matter how familiar or how different the question is, bas demand satisfy karni hai. Second thing I did was, sir, to explain things very clearly. मतलब क्या होता है, जैसे हम GS में लिखते हैं कि उड़ा देते हैं पॉइंट्स लिख लिख के, एग्जाम्पल लिख लिख के, just drop it. So that actually used to translate in sociology also for me sometimes. So I changed that. I started explaining things very clearly. If I'm writing an example, I will just not write this. I will write an example, I will clearly link it with the point in 2-3 lines. Even if it takes some space, I will write that clearly. It's not important to write 5 examples. If you're writing 2 examples with clear linkage with the question, that is more important, is what I felt. Another thing was analysis part. GS में we write multiple multi-dimensional points, but in sociology analysis is very important. I still don't remember the question, but ऐसा था कि तीन चीज़ों को interlink करना था. I think some tribal question, I don't remember the question. कुछ 3 चीज़ों को link करना था. And at that point of time, I did not think कि points में लिखना है, paragraph में लिखना है, क्या करना है. I went with a blank state. कि question में 3 चीज़ों को interlink करने को बोला. I started writing in a flow and kept interlinking them, just satisfying the demand. Fourth thing was, sir, this time I did not stress about thinkers or case studies or criticism or anything. अगर अपने आप ही आ जाते हैं thinkers, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा पढ़े होते हैं कि if there is a question, caste system आएगा, 10 thinker अपने आप दिमाग में आ जाते हैं. And if it links to the question, if it is satisfying the demand, we can definitely add them. It is a cherry on the cake. But ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ thinker लिख दिया हमने and we are not writing the answer. So this is what I followed. ऐसा नहीं कि thinkers ignore करने हैं, but if it is adding to the demand and relevance, I added them. I added examples which explained things clearly. And बाकी सर एंड में ऐसा होता है कि GS में हम opposite side usually लिख देते हैं, लेकिन sociology में just read the keyword, elaborate, explain. इनमें इतनी ज़रूरत नहीं थी opposite side की. The more important part was to explain things very clearly. तो वो I did. So these are the few things that which I changed. And my paper 2 marks increased, 20 marks. This year she got approximately 270 marks. Considering the scale down effect that we saw this year, 270 is equivalent to any other year's 285 to 290. Ayushi, you shared so many important things. I don't really know whether you realize it or not, because whatever you discussed, exact opposite of that
is the notion in the market today. Okay. And students are stuck in the market logic. Okay. And you have escaped that without fear of losing anything. And you firmly believed in the demand of the question, nothing else matters. And just to exemplify what she's trying to say, the question that she talks about, factors contributing to caste system. This is so unfortunate. The moment we look at this question today, any student who has equated sociology with thinker alone, which is not a bad thing in itself, but still may start thinking of M.N. Srinivas first, what G.S. Ghurye may have said, what Andre Bete may have said, what Dipankar Gupta may have said. What in reality should have been there was not Dipankar Gupta, M.N. Srinivas, Andre Bete, or any other thinker. What should have been there was the factor contributing to the continuity of caste system, like politics. And when you talk about politics, while explaining how politics contribute to existence of caste system, then you subtly introduce M.N. Srinivas or Ghurye just to add or strengthen or corroborate your static point. But what is happening is, first M.N. Srinivas is dropped, then Ghurye is dropped, Bete is dropped, and in nowhere we see the demand addressed, only notes reproduced, thinking this is the perfect sociological answer because we have written all the thinkers on planet Earth. Second thing that Ayushi just talked about was that she did not get carried away by the idea of writing critique unnecessarily. Okay, when you heard this idea for the first time that you should not be running after critique, did you not fear that others are doing it? If I don't do it, then I'll be out of the race. Sir, I had already done it. I scored very low with that. So I thought, let's try something which might work. Very nice. So she had already done that, been there, done that. And she knew that did not work. What ultimately works is not X number of critique. जिसके पीछे हम भाग रहे हैं अपना पेज भरने के लिए, लेट अस एडमिट दिस टुडे, हम भाग रहे हैं पेज भरने के लिए ही भाग रहे हैं, आंसर से बचने के लिए भाग रहे हैं और जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए भाग रहे हैं 3 घंटे में. क्रिटिक इज नॉट द सोल्यूशन. सोल्यूशन तो कुछ और था. ओके, थैंक यू. ये भी पॉइंट आपने बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तीसरी चीज आपने एक और बोली आयुषी, दैट यू always thought about what is demand if let it involve 3 variables that you have to interlink, let it involve 4 variables that you have to interlink, let it be very simple answer, but it will only be about those 3 variables interlinkage, only be about 4 variables interlinkage, even if M.N. Srinivas, Andre Bete did not strike me, but you always stuck to demand. Demand is. And this is the beauty, I would say, of what we call as clarity, which gets manifested when we see such people. Now, Ayushi, many students are struggling with paper 2, sociology. Okay. Although I'll be talking about that in a while. People are, as you said, are running after thinkers for paper 2. Okay. Now that you have experienced in the 3 attempts, in paper 2, especially the GS area, as you said, what is working? So I used to be very confused in this. जब GS type questions आते हैं, we have to write it sociologically. So what does it mean? So in my second attempt, I again thought it is thinkers. So I found thinkers for almost all the fringe topics also, and I tried implementing them in the paper. It did not work. So what I finally understood was that analysis is sociology and nothing else. For Very example, if I nice. take a very simple question, what are the reproductive health problems of women in India? Very simple question, very GS type question, very simple question. Now in GS the answer is different, but in sociology how will we write it? Think sociologically means how do we link it to patriarchy? How do we link it to inequalities women face with respect to wealth, power, status, and that limits their access to medicine and hospitals? What is the stigma in society with related to abortions? How female infanticides are happening and why are they happening? Again, patriarchy. So this is sociology and nothing else. मतलब if you are able to analyze it, मतलब इतनी sociology सर हम पढ़ चुके होते हैं कि we can actually do it. So this is how we write a sociological answer to a GS and then nothing else. Very This nice. is I understand. That means sociology is not Leela Dubey, Uma Chakravarti.
with great regards to all of them, they are the sociologists, but they are not sociology. Sociology is what she just talked about. Stigma, the idea of stigma, patriarchy. These things had to be introduced. Only to an extent that your answer demand is met. Okay, nothing else. And I would also now like to make this point very firmly that in case if you are in these 2.5 months have already decided that you will borrow more content for section C or paper 2 Indian sociology, and by which you imply more thinkers, please stop right away. Okay, because these 2.5 months that you have in your hand may not come to you once again next year. And do not get distracted, do not get carried away by your friends. You have a living example here who has seen it all, been there, done that, tried all those things. The market logic and the notions did not work. What works is simplicity, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला लिखने का कोशिश. आयुषी, आप मुझे ये बताओ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट लिखने वाला जो कोशिश जो हम भी क्लास में बहुत एम्फोसाइज करते हैं, उसका मतलब आप क्या समझे? इवेंचुअली आपने बोला अब आप समझ गए थे सिंप्लिसिटी ये है, जब आपने की उसको फाइनली समझ लिया था टॉपर्स की कॉपीज को देख के. वो सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, बता सकते हो कुछ एग्जांपल से? The first attempt में ऐसा होता है, actually the knowledge is very less with the person. When I wrote my first attempt, बहुत limited knowledge थी. So when we write the paper, we actually read the question and then try to answer it with our limited knowledge. But as our attempts increase, the knowledge also increases a lot. So now instead of reading the question, we answer with our knowledge. What do we know? So this is what needs to be changed. Keep your knowledge aside for a while and think what is being asked, and then use your knowledge as and when required. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो पढ़ के आए हैं, लिख कर ही आएंगे पेपर में. तो what is just right, what is being asked, that was वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत सिंपल पॉइंट और बहुत इफेक्टिव पॉइंट. हम पढ़ के आए हैं तो लिख के तो आएंगे ही. उस वजह से कॉम्प्लेक्स हो जाता है आंसर, ये बात सच है. बट अगर हम पढ़ के भले ही आए हो, लिखेंगे सटल वे में ज़रूरत होगी तो, बट लिखेंगे वही जो पूछा पहले है, और उसमें शायद लैंग्वेज सिंपल ही आनी है, और आपके बायसेस शायद आपके डिटर्मिनेशन से हार जाएं. ओके, कि मैंने सिंपल लिखना है, बस जो पूछा है वही लिखना है, उसमें कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट आएगा ही नहीं. सो आयुषी, the best thing, Ayushi, about Ayushi is, personally, if I would talk about sociology, during crash course that she was part of this year, he always stayed curious. We had this Telegram group, okay, in crash course sociology. I would see her asking questions, getting clarity, okay, despite being a ranker herself, okay, despite having gone through what is required, what is not, she always stayed inquisitive, and she always had this determination, no, I need to get clarity on this. Am I going right? Am I not going wrong? This idea of consistently learning about where am I going wrong is missing in many students, because they feel that they have plethora of thinkers with them. How can they ever go wrong? No, you may go wrong. And this, the जितना जल्दी आप इस चीज को समझ लो, उतना जल्दी आपको उसका इम्पैक्ट भी दिखेगा. तो ये चीज़ ज़रूर सीखने वाली है. क्रैश कोर्स की अगर हम बात करें, आयुषी, जो स्ट्रक्चर था हमारे क्रैश कोर्स का, उसमें कुछ ऐसा होता है, जैसा आपको मालूम ही है, कि हम पहले कुछ क्लासेस लेते हैं बिफोर वी टेक द टेस्ट, देन वी हैव अ डिस्कशन. ओके, as you said that you did foundation somewhere else, okay, and I'm sure you must have had your own notes, okay, and in crash course also we are teaching, okay. How did you reconcile these two notes? What was the final strategy that you adopted? Because this is a question many students would be having, that if by chance they have done foundation from somewhere else, how do they reconcile it with the crash course content? Sir, what I found in your crash course, very important thing is you focused a lot on PYQs aspect. You taught things which were very probable to come in the exam. So in my foundation course, I had the whole thing with me.
I had notes for all the topics with me, and I had made my own notes also from Harlembus and everywhere. So especially the most common topics which were expected to come in the exam, or PYQs which we did in the class, I added those notes to my own notes now. So for example, if it's MN Srinivas, I had some of my notes. I took your 1, 2 page, 3 page, jitne bhi notes the, added those notes to my own, and I read MN Srinivas as a whole. Now Okay. this is my knowledge base. And again, in the exam, I will not rely on this. I will just see the question, and from here I will pick up whatever is necessary, irrespective of it is from foundation or crash course or anything. I compiled all my notes at one place for one topic, and in the exam, based on the demand, I utilized. This Okay. is what I. One more question. What is the meaning of, as you said, I compiled? Because usually there are two meanings to it. One set of student will compile lines from crash course in their foundation content. Okay, by finding where is the gap. Okay, there is a gap. Let me add this point here. Second meaning of compilation is just placing the two together. Okay, and ultimately considering the two as a whole, and second as the crux of the previous one. What is the meaning of compilation to you? So the second one, matlab Second the one. first wala to sounds very tedious to me. I did not have that much of time. So I just I took the syllabus line. आप syllabus wise ही बताते तो syllabus line. I had my syllabus wise notes, and for that particular syllabus topic, I added your notes to that part. And whenever I'm going through that syllabus topic, I'll read all of them together. Very nice. So guys, you have only 2.5 months with you. Please don't waste your time adding things from crash course into your foundation notes wherever you did your foundation from. Okay, even if you did with us, you can't add that into that. ये गेम नहीं खेलना है, इसका टाइम नहीं है. इतना मेच्योरिटी आपसे एक्सपेक्टेड होती है कि अब आप समझ जाओ कि वो एक क्रक्स है, उसका उसकी अपनी अहमियत है, इसकी फाउंडेशन की अपनी अहमियत होती है, चाहे आपने जहाँ से भी पढ़ा हो. विदाउट फाउंडेशन यू वुड नॉट हैव अंडरस्टूड एनीथिंग इन क्रैश कोर्स. उसकी अपनी एक ज़रूरत थी, उसकी अपनी एक अहमियत थी, वो वेस्ट नहीं हुआ है, उसी के बदौलत क्रैश को समझ आया है, आप ये समझो. बट अब ये नहीं कि दोनों से इमोशनल हो जाएं और एक को उसमें डाल दें और वो फाइनल डे का वेट करें, अब आएगा मेरे पास वो ब्रह्मास्त्र दोनों कंटेंट का और मेरे 300 प्लस आएंगे. हाईली हाईली मिस्टेकन. ये काम नहीं करना है. ओके, फाइन. आयुषी, we also used to have test discussion. Did you used to watch test discussion और model answer का जो structure होता था, that was suffice for you? No, I used to watch the test. Okay, you used to watch test discussion as well. Yes, so Okay. that was actually more important for me because content to tha hi. The problem was my answer writing only. So Okay. with test discussion, I used to see where am I going wrong in writing my. Very nice. See, many people are not able to really find out time to watch discussions. Okay, because as you know, time crunch is there. And what I'm surprised is that she found out time for that as well. Okay, and she knew that what does she need to borrow from test discussion. Okay, I'm sure you must be watching it 2x 3x. Okay, because you knew what you need to borrow from which aspect. You don't need to follow A to Z everything that we discuss in test. So that means discussions do play one role which model answer may not play. Can you tell me what is that role which model answer may not play? Because many people directly refer model answer. What is that in discussion that you think is important? They're the same thing. Matlab model answer mein you will get the content, and a very similar content you will find in your answer also. 50-60% at least will be same. So you will think you are going right. But when we are discussing, you tell how should it start, what is the exact demand of the question, what is the main keyword of the question which should be answered, and how do we write the body, what should be the conclusion, the whole structure of it. That is something I found in the discussion, which was not there in the Basically structure. structure. Okay, this is a very important point because unfortunately when we directly refer model answer, we are not really considering the basic aspect that the way you write answer there and the way you see answer here are two different things. Most of the times students are not referring answer, they are reading answer and borrowing content from the answer, adding in their notes, making their journey even tougher.
what needs to be done is to understand structuring कैसे करनी है हमें क्वेश्चन में, तोड़ना कैसे, सिंपल कैसे लिखना है. So you don't need to borrow content from. अच्छा, by the way, one more thing, Ayushi, I would like to ask. PYQ books भी आजकल बहुत फैशन में है. Okay, for everything including sociology. Did you refer any PYQ book? If yes, how did you read it? If no, then why not? Sir, I refer to some PYQ books, but what happens is कि this much judgment we do have कि वो आंसर उतने up to the mark नहीं लगते हैं कई बार, and वो समझ आ जाता है that they are not satisfying the demand, but we have to answer PYQ. So what I use ChatGPT also. So I typed the PYQ in ChatGPT, I used that book, and then I wrote my own answer. एंड देन आई मैच दैट आंसर की चैट जीपीटी ने कुछ अलग बताया है क्या, उस बुक में कुछ अलग है, एंड देन माय ओन आंसर, एंड देन आई प्रिपेयर्ड कि ये ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से, सब जगह से देख के अपना ऐड करके दिस इज सैटिस्फाइंग द डिमांड, एंड देन आई यूज दैट. मतलब Very आई nice. डिड नॉट कॉपी इट डायरेक्टली फ्रॉम आइदर चैट जीपीटी और पीवाईक्यू बुक, Hmm. but compiled and use my own judgment to finally create my own answer. Her final judgment stayed with her till last time. And वो किसी भी सोर्स से ज़्यादा बड़ा है. I firmly believe. उसी इसलिए मैंने बोलता लेबर इज बिगर देन द टूल्स. ओके, फाइनल जजमेंट, क्रिटिकल असेसमेंट जो उसके साथ हमेशा रही शुरू से. So, Ayushi, any tips for the students considering we have hardly 2.5 months this time around? If you were to give one more attempt, and thankfully you are not giving, and UPSC is saved now because trust me, she was not competing with students. She was actually competing with UPSC, and she slayed UPSC. Okay. If you were to give one more time, how would you have managed 2.5 months this time around? Sir, I always started my preparation with the syllabus again. Have memorized the syllabus, but I'll go through it again. I used to make a Word doc and I wrote syllabus. This is the for each paper. This is the syllabus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Each point carries this many marks, and each syllabus has these many PYQs. I'll read them, analyze them. The next thing which I'll do is I'll plan my timeline. I made sure that I do not over focus on one thing and neglect another subject. So I equally plan out my time. Then thirdly, there are certain things which I used to do every day. So that because these things require practice. So which were, for example, I used to write 2 case studies of ethics every day. So ethics is something I wrote a part of it every day. Then optional 2-3 answers I wrote every day. Then GS few answers I wrote every day. Another thing which I said in the beginning also, practice answer writing. So every day at least 3-4 hours give to writing. So your speed also increases and you get the hang of it. And another thing is write tests. What happens, sir, in 20 questions, when we face 20 questions, even the examiner designs them in such a way that not all of them are of the same level. Some are easy, most of them are moderate, and some are very tough. Right. So when we go through all of those questions in 3 hours, we understand how to attempt them in a sequence, how much time to give each kind of question, and how to think in the exam, and how to finish it on time. So test is something I will focus on again. And another thing, that Excel sheet of my marks and the highest marks and the gap, and how can I cover that gap. I used to write exactly in points कि इसकी कॉपी में ये 4 चीजें बहुत अच्छी हैं. So this is something I have to implement to reach that highest score in that paper. Clarity. Best thing about her is clarity. She knows what she is aiming for, and she knows how can she aim it. If you guys have any question, you are please free to ask, and then we'll wrap up the session. So we can start with online students, and then I'll definitely pass on the mic to offline guys also. Guys, online students, जो आपके question है, Arjun, could you please give us a takeaway of the resources you used apart from class notes? Arjun, which class notes and which resource are you talking about, GS or optional? वैसे हम GS की बात नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे, honestly मैं आपको बताऊँ, okay? Sahil, her Telegram channel, if any, have you made any Telegram? Not yet. Clarity. So, hey Noor's iPad, sir, how to manage time with GS answer writing daily plus social plus ethics daily? How to manage time with GS answer writing daily plus social plus ethics daily? सर मतलब मेंस के लिए एक कहावत आई यूज्ड टू टेल माय सेल्फ
जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना आप हार्ड वर्क करोगे, मेंस इज वेरी रिवॉर्डिंग। ओके। मतलब प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू में इट माइट डिफर, बट मेंस में जितना हार्ड वर्क यू विल पुट इन, यू विल गेट द रिजल्ट। तो टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर आई आल्सो यूज्ड टू थिंक इतना सारा है कैसे करें, यू हैव टू एक्सपैंड योर डे, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू पुट इन द एक्स्ट्रा आवर्स। थोड़ा इधर उधर से यू हैव टू कट डाउन, मतलब क्योंकि 2.5 months ही है, एंड अभी तक वी वर रनिंग अ मैराथन, अब थोड़ा सा स्प्रिंट लगाने का टाइम है, तो जस्ट पुट इन द एक्स्ट्रा आवर्स, वो थोड़ा लगता है टाइम। यस, ये 2.5 months या 3 months लाइफ में बार बार नहीं आते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लग भी जाए तो लग जाने दो। अभी हाउ टू एनालाइज पी वाई क्यू जी एस एंड ऑप्शनल बोथ। हाउ टू एनालाइज पी वाई क्यू इन जनरल, बेसिकली अगर कुछ एक दो टिप आप देना चाहो कि ये पैरामीटर्स होते हैं पी वाई क्यू एनालिसिस के। सर एज सच आई डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी, बट व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि सिलेबस की लाइन एंड उसके नीचे के 4-5 पीवाईक्यूज, जितने भी 8-10 साल के जो भी पीवाईक्यूज हैं, उसी को ही पढ़ने से समझ आ जाता है कि ये टॉपिक्स यूपीएससी के बहुत फेवरेट हैं, बार बार उसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी ऐसे घुमा के आएगा, कभी ऐसे घुमा के आएगा, तो कुछ टॉपिक्स पे बार बार क्वेश्चन आता ही है, तो एटलीस्ट वो पता चल जाता है कि कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। फिर वो सॉल्व करने से कुछ एकदम हटके भी क्वेश्चन आ जाता है, देन यू रियलाइज कि अच्छा इसको एग्जाम में अगर आता तो हाउ वुड आई हैव आंसर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कैसे सोच सकते थे। तो वही है सर, बस रीड इट मल्टीपल टाइम्स, अपने आप ही थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता डेफिनेटली। अभिषेक, या इसको हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे आज या कल में। iPad, how to make revision if I read polity today, when can reread it and make notes out of it? iPad अनफॉर्चुनेटली अभी ना हम जीएस की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत वास्ट हो जाएगा, फिर वो पंडोरा बॉक्स है ना, खत्म नहीं होता है वो कभी भी। वन स्मॉल थिंग आई ऐड सर, मतलब जैसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हमें भी आते ही हैं कि ये इतना हो गया, अब इसको कैसे रिवाइज करें, वो छूट जाएगा ये, तो वो सर इसलिए बहुत ज्यादा लगता है बिकॉज वी थिंक कि यूपीएससी बहुत बड़ा हुआ है, समथिंग वेरी डिफरेंट, कुछ अलग ही चाहिए होता है। इट्स नॉट लाइक दैट, जस्ट थिंक ऑफ इट सम कॉलेज एग्जाम, हाउ वी यूज टू डू इट, मतलब एग्जाम अगले दिन होता था, इवन देन वी यूज टू पास इट, क्योंकि हम क्या करते थे, पुराने साल के क्वेश्चंस निकालते थे, सीनियर की कॉपी निकालते थे, एंड जो जो जहां जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो क्वेश्चन करके चले जाते थे। तो इफ वी थिंक ऑफ इट दैट वे कि सिंपल एक एग्जाम ही है, तो यू विल मेक योर ओन स्ट्रैटेजी कि अच्छा इतने पेपर देने हैं, इतना टाइम है, ऐसे कर लेते हैं, देन इसको इतने में रिवाइज कर, यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड योर ओन स्ट्रैटेजी इफ यू थिंक ऑफ इट सिंपली एज एन एग्जाम, नॉट समथिंग वेरी ह्यूज, वेरी बिग। वेरी नाइस पॉइंट, and in fact I also repeat the same in my classes. This is not UPSC, this is examination by a body whose name is UPSC. Okay, but eventually है तो एग्जाम ही। इस दुनिया में जितने भी एग्जाम हैं चाहे वो अलग अलग हों, बट प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग तो कॉमन ही होंगे। और सोशोलॉजिस्ट की तो यही खासियत होती है कि वो डिफरेंसेस में सिमिलैरिटीज ढूंढे और पैटर्न्स ढूंढे। एग्जामिनेशन में पैटर्न होता है, एंड आई एम श्योर शी क्रैक दैट पैटर्न। द पैटर्न इज वेरी सिंपल। Every examiner, before making the question paper, would himself refer PYQ. It is not just you who's referring PYQ. They themselves are referring PYQ. During school days, our teachers used to tell us in class 8th and 9th, refer PYQ, previous year question. 10th, 11th, 12th, then bachelor's. Even during our BTech days, Ayushi, I still remember that person who was famous for distributing PYQs, and he was very popular. He was star figure in the whole campus, and he was not a student. He was some Baba. Okay, so he had some unique name that this guy predicts what kind of questions are going to come because he has some unique papers, and we did not realize it is eventually PYQ only. Okay, and this pattern is followed by university professors as well, not just limited to graduation, but in post graduation as well, in MPhil and PhD as well. They themselves are referring to PYQ, and that is why you must understand it is exam having its own rules. PYQ form the basis of those rules. If you follow that, you will definitely crack it. But if you keep considering this as UPSC है ये कोई सिर्फ एग्जाम नहीं है, तो फिर वो रूल्स से आप बहुत दूर हो जाओगे। Okay? Anyway, how to differentiate paper 1 and paper 2 answer because we score good in one but not in other? डिफरेंशिएट की बात ही नहीं है नीरज, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्वेश्चन का जवाब दो। पेपर 1 हो या 2, उससे क्या फर्क पड़ता है?
वो क्वेश्चन अगर पेपर 1 में आ गया जो 2 में आया था पिछले साल, तो क्या जवाब बदल जाएगा? अगर आप ये सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। एएम शाह का सवाल पेपर 1 में भी आया है, कभी एक वक्त था। एएम शाह का फैमिली का सवाल पेपर 1 में पूछा, पेपर 2 में भी पूछा, क्या जवाब बदल जाएगा? ये बेसिक्स को आपने प्लीज ध्यान में रखना है। ये मत सोचते जाओ बार बार यूपीएससी है, ये यूपीएससी, ये है एग्जाम ही। वरुण आनंद, डिड यू प्रिपेयर योर ओन टेम्पलेट्स फॉर रेपिटेटिव टॉपिक्स मैम? फॉर रेपिटेटिव टॉपिक्स डिड यू प्रिपेयर योर ओन टेम्पलेट्स? टेम्पलेट सर, ये टेम्पलेट वाला फैक्टर आई यूज्ड टू यूज इन जीएस, बट सोशियोलॉजी में सर आई डोंट थिंक इट वर्क्स, बिकॉज सोशियोलॉजी में इट इज मोर अबाउट एनालिसिस। तो वो थोड़ा भी क्वेश्चन चेंज होता है तो एनालिसिस चेंज हो जाता है। तो आई डिड नॉट प्रिपेयर एनी सच। ओके। Sakshi, how to deal with initial inertia, the FOMO, especially when so many people are opting for sociology, how to do that extra effort? फिर वही सवाल आ गया, extra effort वाला. For above average marks. Is it extra effort? What do you have to say? सर एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन is what I would say instead of extra efforts. कभी कभी extra effort से नंबर कम हो जाते हैं, तो especially in sociology, just keep it simple, answer the question and keep your effort in the right direction. So what is the extra effort? I would say unlearning the extras is the extra effort. Are you ready for it? Do you have courage to unlearn the extras that you have accumulated over 4-5 years? If you can do that, you have actually done extra. Because other people are consolidating, is very popular word these days. Consolidating things in the name of value addition. What is this value addition, Ayushi? You have seen this journey. Did you crack the meaning of this term? Because what I could see objectively is when people say, sir, I'm doing value addition, I see that they are doing content addition and they are calling it value addition. What is your take on this? Sir, for GS, my stand on value addition is very different. But with respect to sociology, I also did this value addition with a lot of thinkers, especially for the fringe topics. Thinkers, examples, and examples which are happening right now, like very current examples. But actually, that was not needed, is what I understood. Example which is actually relevant to the question and which is clearly explained is what is needed. And thinkers, we already have sufficient number of thinkers. Definitely, definitely. Um, what to do when what do when she got exhausted while studying and how to be disciplined on daily basis? How to be disciplined on daily. Because if any student may get exhausted, how would you overcome exhaustion? Or you would not? Sir, definitely exhaustion is there, definitely. Um, but sir, it is only my personal opinion. Whenever we are working for something for which we have dreamt for so long, uh, there is exhaustion, but something beats that exhaustion. I don't know what it is. Is it our willpower? Is it our dream? Or I don't know what it is. Everyone gets exhausted, but whenever I used to think that this is something I have dreamt of, I left so many things behind for this, and this is something I want to do. Nobody has forced me to be here, and it is my dream. So something in our hearts beats that exhaustion. Very nicely put up. Something you can easily understand. There is something that can't be explained. When you have so much passion for something that you are aiming for, then there is something deep inside you which is pushing you. You can't explain that something. Okay. Deep down, you have it in you to push you every day. Okay. Because you are clear with what you want, and you are also clear with why you want it. Nobody has forced you to aim for it. So there's a line, sir, the victory belongs to those who want it the most. So if you want it the most, the victory will belong to you. That is what I told myself. I should want it more than others. Very nice. Okay. So we'll take one last question, guys. Because we have quite a lot number of questions now, but it's difficult to take all the question. I'm really sorry. But any one question I'll take. Harsh is asking. Oh, not Harsh. It is.
Ejaz, sir, I had your crash course 2022. Should I discard that and focus on new crash course? No, you can't discard. Okay, crash course is meant to strengthen your static. How can you discard that, right? You must stick to it. But crash course 2024, I would still advise you to enroll for 3 reasons, despite you having the previous one. First reason, every year question paper is changing, mindset of examiner is changing, our crash course would also change. It is natural, progressive adaptation. Any biological organ would adapt. We as an organization would also adapt, okay, to the ongoing demand of UPSC, and we adapt every year, every year. And in the process of adaptation, we may add things or we may even remove certain things. And that may actually turn out to be what we call as differentiating factor sometimes. Like last year, I remember Ayushi, this was actually last year only, for the first time I discussed Andre Bete's agrarian classes with the crash course students. Did not discuss this with the 2022 students. The same question came actually for the first time in UPSC last year. This question had never come, and I personally, admire Professor Andre Bete. Okay, and that is why I wanted students to learn more about him. Although he's a static part of syllabus, unfortunately, people don't know enough of his work. Okay, and so these are some things that we usually add every now and then to make sure that the course remains relevant to the requirement of examination. And every year, definitely, PYQ analysis is done to see what could UPSC ask this time around. And now, okay, last question एक ले लेते हैं. Current affairs for sociology resource. For sociology, basically. What's your take on that? This might sound again very counterintuitive, but I did not use anything for current affairs as such. I relied on my static things, and current sufficiently GS में cover हो जाता है. So wherever required, if at all required, वो use हो जाएगा. Separately for sociology, I did not do anything. Excellent point. Many people are reading current affairs 2 times. One for GS and second for sociology. And this is so unfortunate that we think that for sociology current affair is different. It's a current affair written by Dipankar Gupta only. It's a current affair which can't be written by Suhani Heather. It is only written by Dipankar Gupta and Andre Bete. Only then it is current affair for sociology. So unfortunate. When you should realize that eventually on that day, in 3 hours, in those 8 minutes, specifically for that one question, you will not be able to recall everything that you may have read one fine day on Indian Express on by Dipankar Gupta. Hardly one line will help you. For that one line, we are spending days and weeks. Stop wasting your time. Whatever she is saying, that whatever current affairs she prepared for GS organically and naturally, whenever she felt was hitting the demand of the question in sociology, she used it organically, never forced it, right? Okay, guys, आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ऑफलाइन में तो वी कैन टेक इट अप, अदरवाइज वी विल रैप अप द सेशन. यस, ये माइक ले लो आप. मेरा पहला प्रश्न तो है, आपकी 97 रैंक आ गई थी, फिर भी आपने अगला अटेम्प्ट दिया, के पीछे क्या रीजन है? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी, तो आई वाज अलॉटेड. जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 188 रैंक, तभी नहीं, मुझे सेकंड में आपकी 97 रैंक आ हाँ, गई थी, हाँ, उसमें नहीं मिला आईएएस? नहीं, नॉट अलॉटेड. मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हूँ और सोशियोलॉजी भी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होगा मई 2026, उसके लिए क्या करें और क्या नहीं करें प्रिपरेशन के लिए? अभी तो योर फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी हाँ. इन 2026. हाँ. अच्छा, तो यू आर जस्ट स्टार्टिंग हाँ, अभी. अभी. तो वो जो हमने स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, हाँ, वो मे मैं देख टू, रहा था. हाँ, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं.
इनिशियली व्हाट आई वुड से कि इनिशियली हम थोड़ा डर जाते हैं बहुत सारी एंड की चीजें सुन के, बट जस्ट स्टार्ट विथ इट, थोड़ी थोड़ी फेमिलियरिटी आने लगती है सब्जेक्ट से, देन यू कैन मूव टू आंसर राइटिंग, एंड देन यू कैन थिंक अबाउट ऑल द लेटर थिंग्स विच वी डिस्कस. अभी यू जस्ट फोकस ऑन फिनिशिंग द सिलेबस. और वैसे मैं बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से आया हूँ ओके. और मैंने अभी प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में शुरू की। इंग्लिश में. ओके. उसमें दिक्कत नहीं आएगी, पता है, लोग कर लेते हैं। कई लोग ऐसा होता है, वो इंग्लिश बोलने में शायद उतने अच्छे ना हो, बट उनको लिखना आता है, हाँ, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और उनको पता है कि हमको वहाँ इंग्लिश नहीं लिखनी, बस हमको वहाँ कीवर्ड्स लिखने हैं, एक इम्प्रेशन देने के लिए एग्जामिनर को कि भाई हमें जवाब लिखना तो आता है, इंग्लिश भले ही लिखने ना आए, बस अब उस मन से आपको देना है। अब तो मेन की तैयारी करेंगे, प्री की तैयारी कब करें शुरू? तो जब हम साल भर प्रिपेयर करते हैं, तो हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इट्स प्री एंड मेंस इंटीग्रेटेड, कुछ अलग नहीं कर रहे होते हैं हम. लेकिन जब प्री के एग्जाम से 3 मंथ्स पहले, तो वो उस समय यू कैन डेडिकेटेडली प्री का प्रिपेयर कर सकते हैं आप, उसके टेस्ट लगाना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके पीवाईक्यूज एनालाइज करना. तो वो 3 महीने पहले सिर्फ प्रीलिम्स वाला फेज आता है, उससे पहले तक आप दोनों चीजें एक साथ कर सकते और लक्ष्मीकांत बुक कंपलसरी है क्या लानी? हैं. ये तो नहीं पता मुझे कि कंपलसरी है या नहीं है, बट उस टाइम पे मेरी एक फिलॉसफी थी कि बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है मुझे. मैंने बहुत सारी बुक लिस्ट देखी 3-4 टॉपर्स की, उसमें मुझे जो कॉमन दिखा, जो ठीक लगा, आई अडॉप्टेड दैट एंड स्टक टू इट. तो क्यों? लक्ष्मीकांत कॉमन थी तो मैंने वही पढ़ी. क्योंकि मैंने तो लेवल अप आईएएस ज्वाइन कर लिया है, ऑप्शनल भी सर का ले रही है। तो ये बात कहाँ से आ गई इसमें? नहीं, भी लक्ष्मीकांत फिर भी लानी है या नहीं, ये पूछ रहा। पर समझ रहे हो ना तुम, फ्लो तुम्हारा टूट गया बोलते बोलते, समझ रहे हो? इसी चीज का तो ध्यान रखना होता है आंसर राइटिंग में, कि बात कुछ और चल रही हो, कहीं और कुछ और लेके आ रहे हो, समझ रहे हो? चलो एनीवे, अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन बताइए। मैम आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में और थर्ड अटेम्प्ट में आंसर राइटिंग डिफरेंस में, मतलब आंसर राइटिंग अप्रोच में क्या डिफरेंस था आपका? अब सोशियोलॉजी, या आई एम डिस्कसिंग व्हाट विद सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी ओनली ना. वही मेन चीज़ें यही थी. मतलब एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट भी ठीक था मेरा, क्योंकि कम नॉलेज थी, तो सिर्फ डिमांड आंसर सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही थी मैं, तो 262 ठीक ठीक आ गए थे. सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने गड़बड़ की थी बहुत ज़्यादा. टू मच नॉलेज, टू मच थिंकर्स, डिमांड भूल के बस अपनी नॉलेज अप्लाई करना. एंड थर्ड अटेम्प्ट में वो मेरा बेस्ट था, थर्ड वाला, कि बस जो मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए थे कि डिमांड पे फोकस करना है, एंड एक्सप्लेन थिंग्स वेरी क्लियरली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है उसको, ऐसे उड़ा नहीं देना है जैसे जीएस में उड़ाते हैं. अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसको क्वेश्चन से लिंक करना है. एंड पैराग्राफ पॉइंट्स योर चॉइस, डजेंट मैटर, बट एक्सप्लेनेशन शुड बी वेरी क्लियर. अगर पॉइंट्स में भी लिखना है तो 2 लाइन का पॉइंट नहीं लिखना है, अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लिखना है, अच्छे से कंक्लूड करना है, जो क्वेश्चन में पूछा है बस उतना ही आंसर करना है. एनालिसिस अच्छे से बहुत करना है, एनालिसिस पे बहुत फोकस. वेरी मैम नाइस। जीएस में मतलब जैसे शॉर्ट पॉइंट्स लिख सकते हैं, उसमें भी जैसे आपने कहा 2 लाइन का पॉइंट नहीं लिखना है सोशियो में, तो नहीं, हाँ, जीएस में वो चीज़ कर सकते हैं कि 1-2 लाइन की पॉइंट? एक दो लाइन मतलब जीएस में मीन्स 1-2 लाइन का इन द सेंस ऐसा होना चाहिए कि समझ में आए कि क्या हाँ, लिखा मीन्स हुआ है. वैलिड पॉइंट अगर 2 लाइन का है जीएस में। 2 लाइन का, हाँ, आई थिंक. मैम जब तक समझ आए, जब तक सेंस बने, हाँ. वो ना आपके घर के अपने माइक्रो नोट्स नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर को, हम्म. वो टुकड़े टुकड़े में लिखा है डैश डैश डाल के, ओके, वो प्रॉपर सेंटेंस दिखना चाहिए, मतलब सेंस बने उसका, भले वो ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो, बट सेंस बनाए वो, ठीक है? और आयुषी ने जो बोला है सिंप्लिसिटी वाला, उसको ऐड करने के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं, कि ड्रॉप नहीं करने का मतलब क्या होता होगा, एक्सप्लेन करने का प्रॉपर मतलब क्या होता होगा। ये एग्जांपल मैं कल भी जैसे एक सेशन लिया था वहाँ पे भी दिया था, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, पॉजिटिविज्म जैसे एक फिलोसफी हम सब पढ़ते हैं, पॉजिटिविज्म को हम डिफाइन तो कर देते हैं, ओके, जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी बोले या फिर अ फिलोसफी डीलिंग विद डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा साइंटिफिकली, हम जो भी उसको बोलें। बट अब बात जब आती है एग्जाम्पल की, इस पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए, तो बच्चे ज्यादातर क्या कर रहे हैं, ये लिखने के बाद पूरा फिलोसफी डीलिंग विद जनरलाइजेशन ऑफ सोशल वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा साइंटिफिकली, फॉर एग्जाम्पल सुसाइड, ये कर रहे हैं बच्चे, फॉर एग्जाम्पल सुसाइड, फॉर एग्जाम्पल सोशल फैक्ट। अरे ये एग्जाम्पल नहीं है उस बात का जो अभी आपने ऊपर लिखी है, ये तो आपके घर के नोट्स हैं माइक्रो वाले,
जिसको आपने सोचना था, इससे मैंने निकालना है आंसर, उसी को नहीं डाल देना था। वर्ड लिख रहे हैं हम, ड्रॉप कर रहे हैं, एंड वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। एंड वी आर थिंकिंग, एग्जामिनर अपने आप खुद समझ जाएगा। नहीं, उसी स्टेटमेंट का एग्जाम्पल चाहिए। जनरलाइजेशन is developed in positivist philosophy on the basis of data. For example, generalization of on suicide was developed by Durkheim, that with industrialization rate of suicide increases. ये हो गया ठहराव के साथ, रिस्ट्रेंट के साथ, बिना ड्रॉप एंड मूव किए प्लेस एंड फ्लो करना। ये चीज समझने की जरूरत है, राइट आयुष? ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? Ma'am, how would you evaluate your answers after you wrote answers prelims के बाद आपने answers लिखे हुए खुद रोज, तो वो evaluate कैसे करते थे? अ, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था मेरे लिए भी। तो टॉपर्स कॉपीज जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, कि मैंने आंसर नहीं देखा टॉपर का, पहले बस क्वेश्चन देखा जो भी उनकी टेस्ट कॉपी है, अपना आंसर लिखा, एंड देन मैच्ड विद देयर आंसर्स, कि उनके आंसर में क्या डिफरेंट है, एंड बहुत अच्छे से एनालाइज करती थी मैं कि अच्छा इंट्रोडक्शन में क्या अलग लिखा है, बॉडी में क्या अलग लिखा है। जैसे मैंने एक टॉपर की कॉपी बहुत बार एनालाइज करके आई रियलाइज कि हर स्ट्रेंथ वाज हर इंट्रोडक्शंस, कि वो इंट्रोडक्शन में हमेशा एक बहुत अच्छी नई चीज इंट्रोड्यूस करती थी। तो आई इम्प्लीमेंटेड दैट इन माई आंसर्स। तो इस तरीके से। दूसरा, चैट जीपीटी, अगर सही प्रॉम्प्ट देके यू गेट मल्टी डायमेंशनल आंसर, तो उससे भी कुछ अच्छा कंटेंट मिल सकता मैम वो PYQ बुकलेट्स होती हैं जिसमें आंसर्स लिखे है। होते हैं, तो वो भी एक रेफरेंस के लिए यूज़ करती थी आप? थोड़ा बहुत कभी कभार जो कहीं नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है अगर, तो उसमें से चेक कर, बट आई नेवर कॉपीड इट स्ट्रेट अवे कि ये क्वेश्चन है तो यही एक सही आंसर है उसका। ऐसा तो मुझे कोई पीवाईक्यू बुक नहीं मिला। तो जस्ट क्वेश्चन जो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उस बुक से भी देख लो, चैट जीपीटी से भी देख लो, कोई टॉपर्स आंसर है वहां से भी, देन प्रिपेयर योर ओन आंसर जो डिमांड सेटिस्फाई करता हो। बेसिकली सेल्फ इवैल्यूएट करो अपने हिसाब से। हाँ हाँ हाँ। और टेस्ट तो हम लिखते ही हैं, टेस्ट इवैल्यूएट हो जाता Congratulations, ma'am. है। थैंक Ma'am, actually, I wanted to ask about the sources. Ma'am, like I have based my sociology syllabus on Nitin Sangwan sir's Essentials of Sociology. It's a very basic book, and a friend of mine had sir's notes on sociology, so I also went through them. And ma'am, just today I asked my senior you। how should I go through with the syllabus. He also advised me to include IGNOU's material topic wise and case studies and examples. So, ma'am, should we focus on just the material that I've prepared or diversify the topics through every means and source? वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन आई वुड से। बहुत बहुत डिफिकल्टी आती है इसमें भी। आ, तो व्हाट यू कैन डू इज कि अभी जो है आपके पास जो भी है, जस्ट थिंक कि क्या आपको उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई है। फॉरगेट एवरीथिंग। एक बार टॉपिक्स निकाल के देखना, पीवाईक्यूज निकाल के देखना, कि क्या अगर मैं बहुत सिंपल सा टॉपिक पूछूं, एलियनेशन पूछूं फॉर एग्जांपल, या मार्क्स की कोई और थियरी पूछूं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पूछूं, कैन यू एक्सप्लेन इट वेरी सिंपली, वेरी क्लियरली, कैन यू रिलेट सम एग्जांपल विद इट? आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? अगर वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो फिर उतनी ज्यादा जरूरत अभी यू हैव जॉइंड दिस क्रैश कोर्स आल्सो क्या, और एनी अदर कोर्स, और Ma'am, दिस इज द थिंग? actually, I'm aiming for 2026 अच्छा, next year's. नेक्स्ट ईयर Yes. 2026। तो व्हाटएवर यू हैव योर नोट्स, जस्ट सी कि उससे कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई है। जहां जहां ये वीक लग रही है, वहां वहां पे मे बी यू कैन ऐड सम कंटेंट एंड रीड सम मोर, एंड दिस शुड फॉर्म योर बेस। वो आपको थोड़ा सा सेल्फ इवैल्यूएट करना पड़ेगा। मतलब डोंट रन बिहाइंड द कंटेंट फॉर द सेक ऑफ इट, कि मुझे हर चीज का कंटेंट चाहिए, क्योंकि कंटेंट इनफाइनाइट होता है, मिलता ही जाता है, मिलता ही जाता है। जस्ट सी कि ये टॉपिक है, इसकी क्लैरिटी है, पीवाईक्यू सारे अच्छे से आंसर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। टॉपर्स कॉपीज देख लो एक बार, उन्होंने जैसे आंसर करा है कि मैं भी उतना आंसर कर पा रहा हूँ, उतना सफिशिएंट है इन्फॉर्मेशन मेरे पास, अगर है तो इट इज ओके। जिन जिन टॉपिक्स के लिए नहीं है, दैट यू कैन ऐड। And ma'am, is it like accumulating the facts at one place or analyzing the limited ones? Ma'am, for a topic, I'll go through Nitin Sangwan sir's book and IGNOU and sir's notes. ठीक है। Or should I just stick to the notes that I've prepared from Nitin Sangwan and analyze it thoroughly?
like you said that in a question you wrote the cause for gender was politics instead of the writers theorists, हाँ that thing. So is analysis more important than See, on limited both sources? are interlinked है ना, ऐसा नहीं होगा कि हम जीरो नॉलेज से एनालाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा ना. तो फर्स्ट हैव सम नॉलेज बेस, डोंट मेक इट टू लार्ज, डोंट रन बिहाइंड टू मेनी थिंग्स. एक नॉलेज बेस आ गया, देन यू डू एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज. Okay. नोट्स का एनालिसिस तो क्या ही कर पाएंगे अपन, जितना हाँ. नोट्स बन गए, देन डू एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस कि वो Okay. क्वेश्चंस को कैसे मैं और अच्छा आंसर कर सकता हूँ. एंड अगेन एआई बहुत अच्छा टूल है आजकल, use Yes. that also to your advantage. उसमें गलत information भी आती है, so just be careful with it, but as much as you can use. And ma'am, one last thing. कि should I proceed like unit wise or topic wise? कि I should make notes on specific topics, or should I focus on chapters and units on a macro base? Whatever suits for you, whatever helps you to answer the PY. कि अगर PYQs क्योंकि टॉपिक्स वाइज आते हैं, आपको लग रहा है कि टॉपिक वाइज नोट से आप इजीली ज्यादा अच्छा एनालाइज कर पा रहे हो, डू दैट. अगर चैप्टर वाइज बनाने से टाइम बच रहा है और उससे भी आंसर हो रहे हैं तो डू दैट. योर कॉल, मतलब उसमें कुछ ऐसा. Thank you, ma'am. अच्छा, here I would like to add very important point raised by आयुषी. बहुत अच्छा जवाब दिया है आयुषी ने एक पॉइंट का, मतलब मैं भी शायद वही पॉइंट बोलता. आयुषी ने बोला, सवाल ये था, मैं रिपीट कर देता हूँ. इन्होंने बोला कि ये नितिन सांगवान पढ़ रहे हैं और मेरे क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं. पहला सवाल आपका ये था है ना, कि ये दो सोर्स आप पढ़ रहे हो, अब ये सफिशिएंट होगा या फिर और वैल्यू एडिशन करना है, इग्नू वो सब. ठीक है, आयुषी ने जवाब क्या दिया, पढ़ रहे हो दैट इज फाइन, आपको ये अपने आप से पूछना है कि आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ कि नहीं, और क्या आप किसी और को बता पाओगे कि नहीं. कितना अच्छा पॉइंट, मतलब ये क्लैरिटी, मतलब इस जवाब की क्लैरिटी जो आयुषी ने जवाब दिया. आयुषी तुमको पता होगा शायद, तुम्हारे लिए बड़ा सिंपल होगा बोलना, बट ये बहुत ही क्लियर माइंडसेट वाला इंसान ही ये जवाब दे सकता है कि बात ऐड करने की नहीं होती. आपने पढ़ तो लिया होगा सांगवान में या मेरे नोट्स में एनोमी वर्ड को, लेकिन एनोमी जानते हो क्या होता है? क्या किसी रिक्शे वाले को बता पाओगे एनोमी क्या होता है? अगर नहीं बता पा रहे हो, आपकी लाइफ में एनोमी आ गया है. ठीक है, और अगर सिर्फ रटा हुआ है तो वो उस दिन एग्जामिनर ले आएगा आपकी लाइफ में एनोमी. ठीक है, एनोमी का एक सबसे सिंपल मीनिंग जो रटा हुआ है, एंड लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, चाहे ये चीज हम क्लियर बाकियों को करें या ना करें, लेकिन एक चीज हम जरूर बताएं, ज्यादातर टाइम बच्चे एनोमी का मतलब क्या समझ रहे हैं? फेज ऑफ नॉर्मलेसनेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग सोसाइटीज ट्रांजिशन. ये ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं. सोसाइटी जब मूव करती है, नॉर्मलेसनेस आता है. ओके, अच्छा, अब इसका एग्जांपल भी देंगे. जब एआई आता है तो नॉर्मलेसनेस आ जाता है, जॉब चले जाती है. जब वो आता है तो ये हो जाता है. ठीक है, अच्छा, अब अंडरस्टैंडिंग क्या है फिर? ये तो हो गया रीड किया हुआ. अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? एनोमी का मतलब होता है जब आपके डिजायर्स के ऊपर कोई रेगुलेशन ही ना बची हो, आप एंडलेस डिजायर्स कर रहे हो लाइफ में. आप शहर में आके, जब तक गांव में थे डिजायर्स वर वेल कंटेन्ड, शहर जाते जाते एस्पिरेशंस ने आपकी डिजायर्स खोल दी हैं. And if you're not able to achieve it, you start questioning yourself, and then suicide comes, or depression comes, or anxiety comes. All of us in modern society are victim of anomie. Somebody wants to aspire for IIT, somebody wants to aspire for IIM, somebody wants to aspire for civil services. All of us have endless desire. That means all of us are victim of anomie. This is what anomie is. If you have clarity of this level, then you know anomie. You don't need to refer IGNOU. But if you don't have, you are most welcome to keep adding things. This is what Ayushi wanted to clarify, I guess, right? Okay. Any other question, guys, offline में? मैम आपकी सोशियोलॉजी के लिए पर आंसर कुछ स्ट्रेटजी थी? जैसे कि बहुत से टॉपर्स कहते हैं कि 3-4 थिंकर होने चाहिए, या फिर 3-4 एग्जाम्पल और बुक स्टार्टिंग में आनी चाहिए इंट्रोडक्शन में. तो मीन्स मैम ऐसे आपकी कोई थी? नहीं, मतलब ये मैंने थर्ड अटेम्प्ट में सब डिस्कार्ड कर दिया था, बिकॉज दिस वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. तो वही डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो सेटिस्फाई हो जाए. और ऐसा भी आंसर नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही प्लेन जीएस का आंसर है कि किसी रैंडम इंसान ने लिखा. ऑब्वियसली इतनी सोशियोलॉजी हम पढ़े होते हैं
कि अपने आप ही वो कीवर्ड्स, वो थिंकर बीच में एक अपने आप आने लगता है, वो ऑर्गेनिकली आए, जस्ट ट्राई ऐसे फॉर फिक्स्ड दैट। नहीं था कोई नहीं, कि 4 डालने 5 डालने हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई थिंकर होता ही नहीं है हमारे पास, तो वो और अच्छा लिखने का स्कोप होता है उन क्वेश्चंस में, बिकॉज देन इट इज ऑल एनालिसिस, यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ डिफरेंस। मैम माय सेकंड क्वेश्चन वाज़ आपका इंटरव्यू स्कोर 210 था। मीन्स काफ़ी अच्छा इंडिया में सेकंड हाईएस्ट पे है। तो मैम आपने ऐसा क्या किया था स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए? हम इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक, इस बार तो बहुत कम टाइम था एक्चुअली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए, बट इन जनरल व्हाट आई फील अबाउट इंटरव्यू इज कि हमें लगता है वो 20-25 मिनट में कुछ सवाल जवाब हमारे से हो रहे हैं एंड देन आवर स्कोर इज डिसाइडेड, बट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पर्सनालिटी, वो जो हम पूरी लाइफ लॉन्ग बिल्ड करते हैं। हम रिफ्लेक्टेड थ्रू ड्राफ्ट सॉरी, ड्राफ्ट से रिफ्लेक्ट हो जाता है वैसे? डैफ नहीं, डैफ से नहीं, द वे वी स्पीक, द वे वी अच्छा। कन्वे, व्हाट आई थॉट कि जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन होता है उसमें पढ़ना, कुछ क्वालिटीज असेस होती है इंटरव्यू में, मेंटल अलर्टनेस, रेलेवेंट नॉलेज ऑफ रेलेवेंट करंट सोशल इवेंट्स, ऐसे कुछ कुछ इंटीग्रिटी ये सब। क्वालिटीज लिखी हुई है ना, डेप्थ ऑफ नॉलेज, ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो व्हाट आई थॉट कि द वे व्हेन आई एम टॉकिंग टू देम, हाउ एम आई रिफ्लेक्टिंग दोज क्वालिटीज, फॉर एग्जांपल वर वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ सिविल सर्वेंट इज पॉजिटिविटी, वो हमारी प्रिपरेशन में भी बहुत रिफ्लेक्ट होती है और लाइफ में भी बहुत रिफ्लेक्ट होती है। तो whenever they are posing a question कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, then you have to be the one, you have to take charge and say कि नहीं sir, we will do it, you have to reflect that positivity in your answer ना, फिर your answer doesn't matter, that quality which you are reflecting matters. So this is what I prepared in my answers जब मैं इंटरव्यू को प्रिपेयर कर रही थी कि whenever I am answering something, content तो जो है वो आ ही जाएगा, but those qualities should be reflected in my एंड मैम लास्ट क्वेश्चन था कि जीएस वैल्यू एडिशन के लिए आपने क्या किया? GS कि वैल्यू एडिशन के लिए? वैल्यू एडिशन के लिए। अच्छा, so this is a lit, sir can I discuss, it's a हाँ little हाँ, longer thing. या श्योर श्योर। so जीएस में ऐसा होता है कि हर जीएस का पेपर डिफरेंट होता है, हर पेपर में मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हर सब्जेक्ट का वैल्यू एडिशन डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जीएस 1 में सोसाइटी है, तो आई यू जिनका मतलब सोशियोलॉजी ऑप्शनल वालों को बहुत बेनिफिट है उसमें, आई यूटिलाइज माई ऑप्शनल का नॉलेज अ लिटिल, नॉट थिंकर्स, नॉट सो मच, वो नहीं करना है, एग्जाम बट द एनालिसिस, अगेन द एनालिसिस, तो वो एनालिसिस जो आता है, जैसे एक कभी कोई क्वेश्चन आया था वर्क फ्रॉम होम का फैमिली पे क्या इम्पैक्ट है, एनर्जी पे ह्यूमन फ्रीडम विमेन, कुछ ऐसा क्वेश्चन था ना, तो सोशियोलॉजी स्टूडेंट कैन राइट अ वेरी गुड आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, तो वो वैल्यू एडिशन हो गया फॉर एग्जाम्पल GS1। नाउ फॉर एग्जाम्पल GS3 में 4-5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, हर सब्जेक्ट का वैल्यू एडिशन डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी, उसके लिए आई यूज टू हैव सम रेडीमेड डेटा रिपोर्ट्स विथ मी, आई यूज टू हैव सर्टेन टेम्पलेट्स विथ मी, सर्टेन कंक्लूजन्स रेडी विथ मी कि जो एकदम बहुत अच्छे कीवर्ड्स चल रहे हैं इस समय वो कंक्लूजन में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा डेटा, बहुत अच्छा एनालिसिस था मेरे पास, तो हर सब्जेक्ट के लिए वो मैंने करा था, और उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के कीवर्ड्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में यू डोंट से हाइट, यू से ऑल्टीट्यूड, यू डोंट से रेनफॉल, यू से प्रेसिपिटेशन, तो दिस इज समथिंग आई फॉलोड इन जीएस की बहुत अच्छे कीवर्ड्स यूज करूँ मैं, अच्छा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन यूज करूँ, जहाँ पॉसिबल है वहाँ रिपोर्ट्स डेटा वगैरह यूज करूँ, एग्जाम्पल्स यूज, एंड न्यूज़पेपर जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। ये भी पूछना था न्यूज़पेपर आप कैसे यूज करते हो? टॉपिक वाइज की आपने लिस्ट बना रखी है? एग्जांपल मिला तो ये एक तो ऐसा होता है कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो बहुत चीजें बिना कुछ कहे अपने आप दिमाग में रह जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आए, तो डिजास्टर्स की न्यूज आती रहती है ना, तो अब मैंने कहीं नोट्स नहीं भी बनाए होंगे ना, तो भी यू विल रिमेंबर कि ये साइक्लोन आया था, ये अर्थक्वेक आया था, ये ऐसे आया था, तो यू विल ऑटोमेटिकली राइट इट, कोई नोट्स ना भी होंगे तब भी। सेकेंड थिंग इज कि पीवाईक्यूज, बार बार पीवाईक्यूज पढ़े होंगे तो पता होगा कि कॉमन टॉपिक्स हैं कुछ, उन पे तो क्वेश्चन आने ही है, वाटर पे क्वेश्चन आना ही है, तो वाटर पे अगर कोई अच्छा आर्टिकल आता था, सम गुड डेटा, गुड स्ट्रक्चर, एनीथिंग, तो आई यूज्ड टू नोट इट डाउन। या फिर एग्रीकल्चर पे कुछ अच्छा एनालिसिस आता था, बहुत अच्छे सजेशंस आते थे, तो आई यूज्ड टू नोट इट। दिस इज हाउ आई यूज्ड। कौन से न्यूज़पेपर? हिंदू, आई यूज्ड टू रीड द हिंदू, कोई भी पढ़ सकता है, मतलब ऐसा कुछ। एथिक्स, अच्छा, एथिक्स बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट लगता है मुझे, बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उसमें। द गुड थिंग अबाउट एथिक्स इज द सिलेबस इज वेरी लेस कंपेयर टू ऑल द पेपर्स, सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। तो हाउ आई प्लान्ड इट कि आई हैड माई नोट्स, बहुत कम सब्जेक्ट्स थे जिनके मैंने नोट्स बनाए, एथिक्स वाज वन ऑफ देम। रिसोर्सेज, यार मल्टीपल रिसोर्सेज थे, एथिक्स में रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, मतलब जैसे मैंने फाउंडेशन कोर्स करा था तो वहाँ क्लास के नोट्स थे, फिर मैंने ऑनलाइन कुछ कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल नोट्स थे वो यूज़ कर लिए, तो अपने नोट्स बना लिए। देन उसके बाद एथिक्स में व्हाट वर्क्स इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन,
क्योंकि क्या होता है जब हम आंसर लिखते हैं एथिक्स का, स्पेशली सेक्शन ए का, तो हम जब अपनी प्रैक्टिस में वो आंसर लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल सोचते हैं, तो एक्चुअल एग्जाम में वही एग्जाम्पल वहां याद आता है, वॉट एवर वी हैव डन इन आवर प्रैक्टिस सेशंस। तो राइट एज मेनी आंसर्स एज यू कैन, प्रैक्टिस अलॉट, क्योंकि पेपर लंबा भी आता है तो टाइम में खत्म कर। दूसरी चीज, केस स्टडीज में मैं जब केस स्टडी सॉल्व करती थी तो और टॉपर्स की केस स्टडीज देखती थी, तो मुझे ना कुछ इंसाइट आते थे हमेशा। अपने आप ही अपन कुछ भी सॉल्व करो, अपने आप दिमाग में कुछ इंसाइट आता है कि अच्छा एनवायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी की जब केस स्टडी आती है तो उसको ना थोड़ा सा ऐसे हैंडल करना होता है। तो आई मेड अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड आई रोट दोस पॉइंट्स, हाउ टू डू केस स्टडीज करके एक डॉक्यूमेंट बनाया था मैंने, एंड आई यूज टू राइट इट। आई रोट 20-25 पॉइंट्स, वट एवर पॉइंट यूज टू कम। एंड इन दी एग्जाम, जब एक्चुअल एग्जाम था, तो उस एग्जाम से पहले मैंने वो सारे पॉइंट्स रिवाइज करे थे कि दिस इज समथिंग आई हैव टू रिमेंबर, कि जब ऐसी केस स्टडी आती है तो उसमें ये वैल्यू रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की ये वैल्यू रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये सारे कीवर्ड्स आने चाहिए, ये एग्जाम्पल आने चाहिए। जैसे मुझे ये पता था कि कोटेशंस बहुत लोग यूज करते हैं, बट दैट वाज नेवर माय स्ट्रेंथ, मुझे कभी याद ही नहीं होते थे। तो आई गिव अप ऑन दैट, मतलब कोट्स नहीं लिखेंगे लेकिन एग्जाम्पल्स जो लिखेंगे बहुत बढ़िया लिखेंगे। तो फिर मैंने एग्जाम्पल्स बहुत लिखे। अनदर थिंग विच आई यूज फॉर एथिक्स वॉज कि लोग एग्जाम्पल्स लिमिट कर देते हैं टू सिविल सर्वेंट्स, बट इतना पढ़ते हैं हम जीएस, व्हाई नॉट एक्सपैंड आवर एग्जाम्पल्स। आईआर के एग्जाम्पल्स हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, सिक्योरिटी है, इन डिजास्टर मैनेजमेंट है, हर जगह एग्जाम्पल है एथिक्स का। तो आई यूज दोज, बस तो बहुत ज्यादा याद भी नहीं करना। Great. So, guys, understand the clarity that she has about everything. Okay. Starting with the question that he asked about interview, DAF. Okay. And she said, DAF is fine. Okay. But eventually, what she's trying to say is that it is not your qualification, academic or extracurricular. It is those 20 minutes, 25 minutes, which is going to define how you are perceived as by those people. Whether you are worth 200 in terms of personality, whatever the criteria may be for that, or not. Okay. Whether you are from IIT, IIM or not is not going to shape your marks. It is your confidence, the clarity that you have when somebody is asking you question, what is your body language? Okay, do you get nervous? Because that appears clearly on your face. And that hits hard in the next coming minutes. Your confidence starts shaking, and that gets reflected in the way you speak. You start stuttering. And this does not matter whether you are from IIT or not, this happens to anyone. And therefore, in those 20-25 minutes, what you are saying, is it answer or is it explanation? Again, the same logic is relevant. कि आपने उतना ही बोला जो पूछा है, कुछ और बोल दिया। क्योंकि कभी कभी हम थोड़ा टाइम लेते हैं सोचने में उनका जवाब देने के लिए, तब तक कुछ और बोल रहे होते हैं, तब तक उनका सुनने की क्षमता जा चुकी होती है, क्योंकि वो 55+ है। ओके, उस उम्र में लोगों को ज़्यादा सुनने का मन नहीं है, बस जितना पूछा उतना ही बोलने का उनका वो है, क्या कहते हैं, हिम्मत, या जो भी आप उसको बोलें। हाँ जी। So I usually avoid telling people about essay because 3 attempts I tried 3 different strategies. I scored very similar marks in each of the attempts. तो ऐसे में आई फॉलोड वेरी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग नहीं करा था मैंने। अगेन सेम थिंग, टॉपर्स के ऐसे देखे, अपना ऐसे निकाला, जो भी है क्लियरली इंटरप्रेट करने की कोशिश की एंड एक्सपैंड ऑन दैट। मैं आई स्टार्टेड विद एनेक्डोट बट इट इज नॉट फिक्स्ड, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है ऐसे का, देयर इज नो स्ट्रक्चर। यू रीड मल्टीपल कॉपीज, यू विल फाइंड मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। सो अल्टीमेट थिंग इज रिलाई ऑन व्हाट यूपीएससी इज सेइंग, मतलब कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डिमांड सेटिस्फाई करना चाहिए क्वेश्चन की। तो बस वो अगर कर रहा है तो देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल कि फिलोसफिकल ऐसे को ऐसे ही तोड़ना है। इंटरप्रिटेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब मार्क्स बहुत कम तब आते हैं जब गलत ही इंटरप्रेट कर लेते हैं लोग। डोंट डू दैट मिस्टेक, क्लियरली इंटरप्रेट होना चाहिए, जो लिख रहे हैं यू शुड आंसर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। अगेन सेम इन ऐसे ऑल्सो, अगर क्लियर इंटरप्रिटेशन है, एक्सपेंशन है उसका, तो आई थिंक दैट शुड, कहीं लिखा ही नहीं है ऐसे में फिलोसफिकल वर्ड। हम ये तो हमने बनाया है ना कि फिलोसफिकल ऐसे है, वो तो एक Clarity. लाइन लिख के आते हैं, this is our interpretation, it is philosophical, they just write a simple quote, it is your interpretation of that quote now. So there is nothing like philosophical per se, just one quote and its interpretation. मत करना ये काम,
नोट्स का कह रहे हो ना आप, है ना? देखो, एक चीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इन्होंने बोला कि मैम के नोट्स मिल सकते हैं। हाँ, शायद मिल भी जाएंगे कभी, होगा कुछ नहीं, पर उससे होगा कुछ भी नहीं। मैम के नोट्स मत देखना, मैम के आंसर शीट्स देखना, ठीक है? फिर वही गलती मत कर देना जो बहुत लोग करते आए हैं, ठीक है? नोट्स तो तुम्हें मार्केट में बहुत लोग के मिल जाएंगे, क्लैरिटी बहुत कम के पास है, और आंसर राइटिंग की क्लैरिटी तो और भी बहुत कम के पास। तो मैम के आंसर कॉपीज देखना कि क्या है उसमें स्पेशल, जो हर साल भली मैम का पेपर गुजरात में जा रहा हो किसी प्रोफेसर के पास चेक करने के लिए, या फिर दिल्ली में या चेन्नई में, हर टाइम अपील कर रहा है हर एग्जामिनर को, कुछ तो कॉमन रहा होगा कि सवाल बदलते गए, साल बदलते गए, प्रोफेसर चेक करने वाले बदलते गए, लेकिन सबको इनकी कॉपी अच्छी लगी। वो कॉमन ढूंढने की कोशिश तुम खुद करो आंसर कॉपी से, ठीक है? और उसके लिए कोई नोट्स मत ढूंढना कि अब ये नोट्स निकालें हमने बताने के लिए कि आंसर कॉपीज टॉपर की कैसे देखते हैं। ये खुद तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है? ओके गाइस, सर हाँ जी, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ओके। my question was on the same line. So was first of all, hats off to your mother. She has raised you full and mindfully. My question is that the tools is same for all over India, like sociology का जो भी resources सब कुछ सबके पास same है. But with due regard to your academic excellence in IIT in UPSC, uh, in order to excel the labor that done takes some grit or determination or the mindset. अभी जो भी अप्स में जो भी आप यूट्यूब ओपन कर रहे होंगे, आपका रैंक 97 हो गया, अप हो गया, और डाउन्स में आप आपके लिए क्या बोलते थे? अप्स एंड डाउन्स, व्हाट वुड यू से टू योरसेल्फ इन ऑर्डर टू स्टे calm and continue the journey? Okay, so you're talking about the mindset. Mindset required. Okay. So this question a number of people ask, mindset and strength and motivation. Again, personal opinion, I am not a very big believer of motivation per se, because motivation is very fragile. Someday you are motivated, someday you are not. What is permanent is discipline. And it goes for all the people who excel in their respective fields. Someday you will feel like going and doing it, आज तो सब कर देंगे, someday you will feel कि नहीं करेंगे. So don't rely on that feeling कि मन कर रहा है तो करना है, मन से नहीं करना है. The only thing which helps is discipline. कि आज इतना है टारगेट, ये करना है तो बस करना है, मन कर रहा है नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर एट ऑल. डिसिप्लिन. सेकेंड थिंग विच हेल्प्ड मी वाज कि मैं बहुत सिंपली सोचती थी कि एग्जाम ही है. जितना ज्यादा हम उस चीज को बड़ा बनाते हैं उतना ज्यादा फियर फैक्टर आने लगता है और उतना ज्यादा हम इधर उधर भागने लगते हैं घबराहट में. तो आई यूज टू टेल माई सेल्फ इट इज एन एग्जाम. हर बैकग्राउंड का इंसान क्लियर्स दिस एग्जाम. इफ दे कैन, सो कैन आई. And third important thing was my mother. तो find some emotional support in your life. मतलब there were times कि जब लगता था कि it is tough, syllabus ही खत्म नहीं हुआ, कल पेपर है, कैसे होगा. तो she was like कि I have seen you studying, I have full faith in you, तुमने बहुत मेहनत की है, and you will get through it. And मतलब हर just one statement कि तेरा तो होकर ही रहेगा, लिख कर ले लो मेरे से. Just one statement, अब उनको कैसे ही पता है क्या रिजल्ट आएगा, बट वो कोई बोल देता है ना, तो it gives you a lot of faith in yourself and motivation. So find such emotional support in your life. बस यही था. So Ayushi, to wrap up the session, I would just say, I think you have been a daughter any mother would want, Sir, I have and the mother you any have daughter would want. you have a friend in you that any friend or colleague would want. Okay, and you have the quality of an officer that any person aspiring to be a civil servant would want to have, which is what I say, the quality of clarity, compassion, empathy, cooperation, at the same time competition. And that is why I am 100% sure wherever she will go in her life, she will excel, because she has these tools, not just tools, but the labor as well. And she knows how to use these things. Okay. With this, we will close the session, and I thank you all offline and online students for attending the session, and I'm sure that you must have कुछ आपने वो बेसिक चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी.
not in terms of book or consa note, in terms of method of how to read anything and till what time to read it, which is more important question which should be raised today when we have ample amount of sources in everybody's mobile. Okay, thank you so much, Thank you so Ayushi. much. It was really pleasure having you. I wish you all the very best in life. Thank Thank you you so much. guys. Thank you so much.